with the next video, grade 5 subject EVS. Last video we have started with unit 5 seed. Yes, already we have completed its 3 parts. Today is the 4th part of this chapter. In this video we are going to continue with so many seeds. This is the topic name. What is the meaning of so many seeds? Why I am telling this? So many seeds, it means we are talking about the different kind of seeds which we are using for cooking at home. हम लोग जो घर पे खाना बनाने के लिए उसको यूज करते हैं, that type of seeds. Then some seeds directly we are eating, some we are planting in the pot and then we are growing a plant. Likewise we are using. So here we will talk about the different kind of seeds. Okay. So collect different type of seeds. What you have to do, you have to collect from your mother the different kind of seeds and then observe shape, size, color, texture. It means smoothness or roughness of that particular seed. What we have to observe? The shape of the seed. Then size, color. Yes, as you know that the size and shape color of the moong and chana is different. Chana's shape is different. Chana's moong's shape is different. Then color. Yes, in chanas also there are different colors. White, brown, black. Even red chanas are also there. So these are the different type of seeds. Then texture. What is the meaning of texture here? Smooth or rough? What we have to observe? We have to touch it and then we have to feel whether the surface is smooth or whether the surface is rough. जब भी हम उसको टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? स्मूथ फील होता है और रफ. Like example, just take one piece of moong and in another hand just take one piece of chana and just observe their texture. Moong is very soft. Moong आपको टच में बहुत soft लगेगा. But when you will touch the chanas, you will feel little bit rough. So that we have to observe in texture. It means the smoothness and roughness of the seed we have to observe. So here let me show you some photographs of the different kind of seeds. Are you able to see? Different seeds are there. Colors is different, size is different, and yes, their texture is also different. But texture you can observe by touching them only. By the photograph you can observe their smoothness or roughness. But we can observe shape, size, and color of their particular seeds. Okay. So what you have to do? You have to collect some seeds from your mother and just observe this shape, size, color, and texture of their different kind of seeds. Okay, this is your homework that you have to do, and yes, you have to share your experience with me in the live session. Okay, so now let's start with the next is so many seeds. In that we have different seeds which are very light also. काफी सारे seeds ऐसे होते हैं जो हम उनको हाथ में उठाते तो we are feeling light. Some are very heavy also. Some colors are different. Yes, we can say here the seeds are bifurcated as the spices also. Which seeds we are using as the spices in the kitchen, that we have to talk. Okay, so let's start with first light seeds. It means which are very light. Whenever we are lifting them, we are not feeling any weight. वो बहुत ही ज़्यादा light होते हैं. तो example is cumin. It means जीरा. आपको पता ही होगा in the kitchen our mother is using जीरा for different kind of things. Any seed, yes, any seed. It means सौंफ. वरियाली जैसे आप कहते हो उसको, right? So वरियाली is also like that, which is light in weight. Okay. Then seeds of fruits. Yes, we are eating different fruits, right? आपने कभी नोटिस किया जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें से अंदर से कोई सीड निकलता है. So let's take an example of apple. Okay, if you are eating apple, when your mother will cut it in a half piece, you will able to see small brown or reddish color, small seeds you will able to see. That are the seeds of apple. Okay, then let's take one example of orange. Yes, orange जब भी हम खाते हैं we are taking out white color seeds from that. हमें orange में से white color के seeds दिखाई देते हैं. Then guava also, in that also some white color seeds are there. So apple, the fruits are also having the different kinds of seeds inside it. Then seeds of vegetables. Yes, you maybe know. आपको पता है कौन से vegetables में से seeds निकलते हैं? Yes, guess करो. सबसे पहले हमारे माइंड में वर्ड आता है tomato. Yes, tomatoes is having the seeds inside it. Then lady finger also, right? Lady finger यानी भिंडी. आप जो भिंडी खाते हो उसमें भी आपने देखा होगा white color के सर्कल शेप में seeds होते हैं. Then cucumber, right? cucumber में भी आपने देखा होगा ऐसे triangle shape में seeds होते हैं white color के, right? In that also there is a different kind of seeds in the vegetables. ऐसे दूसरे भी बहुत सारे vegetables होते हैं. In that the seeds are inside there. Seeds used as spices. As I told you, spices it means masale.
ऐसे सीड्स जो हम लोग मसाले की तरह यूज करते हैं इन द किचन. So that seeds are cumin. Cumin it means जीरा, as I already told you. Then mustard. Mustard it means राई. राई आपने देखा होगा, आपकी मम्मी जब भी कोई वघार करते हैं तो उसमें जीरा और राई का ज़्यादा करके यूज होता है फॉर डूइंग द वघार. इट मीन्स कुछ भी नई चीज़ बनती है, सपोज ढोकला और एनी अदर थिंग. सो राई एंड जीरा आर द मेन स्पाइसेस विच आर यूज्ड फॉर दैट. Then aniseed, yes, सौंफ is also used sometimes in पोहा. Also you have observed somewhere, जब भी आप कहीं दूसरी जगह पे पोहा खाने जाओगे तो you will able to see some seeds of सौंफ also. आपको उस पोहा में सौंफ भी दिखती है. And in other सब्जीज also, in other any फलार item also, snacks items also, the persons are using cumin, mustard and aniseed. Cumin it means जीरा, then राई and aniseed. Aniseed it means सौंफ. वरियाली का भी यूज होता है. ओके, सो हियर वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स. नाउ द वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज स्मॉलेस्ट सीड. आपने कभी सोचा है कि हम लोग अगर इफ वी विल थिंक कि विच इज द स्मॉलेस्ट सीड, वी हैव लर्नड अबाउट सो मेनी सीड्स, वी हैव सीन द फोटोग्राफ्स आल्सो, बट हियर विच सीड इज द स्मॉलेस्ट सीड? सो स्मॉलेस्ट सीड इज क्यूमिन और मस्टर्ड. क्यूमिन इट मीन जीरा, या तो फिर हम मस्टर्ड को भी बोल सकते हैं, अदरवाइज राई. पता है ना, जीरा और राई का जो साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल. सो दैट टू सीड्स आर वेरी स्मॉलेस्ट. देन लार्जेस्ट सीड, यस, लार्जेस्ट कौन सा होता है? मैंगो. यस, जब भी आप मैंगो का आपकी मम्मा मैंगो काटते हैं तो यू आर एबल टू सी अ बिग अमाउंट ऑफ सीड इन दैट. एक बड़ी सी साइज का मैंगो आपको वहाँ पे दिखता है, सीड दिखता है. दैट इज द मैंगो सीड एंड दैट इज द लार्जेस्ट सीड इन ऑल, इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नॉर्मल सीड. जो मैंगो का सीड होता है दैट इज द वेरी largest seed that is used in our kitchen. Okay, so here we have learned about the so many seeds. So now let's start the new topic and that is wandering seeds. What is the meaning of wandering seeds? Wandering in simple meaning we can say wandering it means to travel, to go from one place to another, to wander something. It means नई नई चीज़ों को नई places को travel करना and yes to observe the new things. That is the proper meaning of wandering. But here, what about the wandering seeds? How the seeds can travel? Can you think? Seeds कैसे travel कर सकते हैं? Yes, for that the topic is started first of all. Trees remain at one place throughout their life. The first thing, from where we are getting the seeds? Seeds कहाँ से मिलते हैं? From the trees only, right? So trees remain at the one place throughout their life. For the whole of the life, जितना time भी वो trees living condition में होते हैं, it means grown up होते हैं, they are living at a one place only, but their seeds are great travelers. Yes, उनके जो seeds होते हैं वो बहुत ही अच्छे travelers हैं, great travelers. It means they are going from one place to another by their own and maybe with the help of nature, right? So कैसे होता है? The seeds can fly with the help of air. Yes, air is also one kind of natural thing that we are getting from nature. So the seeds can fly with the help of air. They can fly with the help of air. There are some seeds who can fly with the air. आपने नोटिस किया कभी व्हाइट कलर का एक सीड आपके पास कभी आ जाता है? लेट मी शो यू द फोटोग्राफ. सी, दिस इज अ फोटो. मे बी यू हैव ऑब्जर्व समटाइम सडनली दिस सीड इज कमिंग टू योर रूम और समवेयर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड. आपके पास सडनली वो सीड आ जाता है एंड मे बी टू दिस यू आर टेलिंग एज अ विश. आप कई बार ऐसा समझते हो कि ये तो मेरी विश है और आप उसको अपने हाथ पे रख के विश करते हो एंड देन यू आर फ्लाइंग इट अवे. फिर आप अपने माउथ की एयर से उसको फ्लाई कर देते हो. आई थिंक यू हैव ऑब्जर्व दैट थिंग, राइट? और आपने ये सारी चीज़ें की भी होंगी, राइट? सो दिस इज द सीड विच इज फ्लाइंग विद द एयर. व्हाइट कलर का होता है एंड यू आर थिंकिंग दैट दिस इज विश और आप फिर उसको विश मांगते हो अपने हाथ पर एंड देन यू आर flying it away. So that is the seeds which can fly with the help of air. Yes, some plants spread their seeds over long distance on their own. What is the meaning of this? काफ़ी सारे plants और trees ऐसे होते हैं when the air is coming. Suppose बहुत ज़ोर से air चल रही है, we can say as a wind बहुत ज़ोर से आ रही है और storm situation है. So what is happening? Their leaves, जो उनके leaves होते हैं trees के, वो हिलना start कर देते हैं like this. और जैसे ही उनका मूवमेंट होता है द सीड्स आर कमिंग डाउन ऑन द फ्लोर. उनके जो सीड्स होते हैं वो फ्लोर पे गिरने लगते हैं और अदरवाइज दे आर डायरेक्टली गोइंग टू द लॉन्ग डिस्टेंस. वो काफ़ी दूर तक भी डिस्टेंस तक भी जा सकते हैं. दैट इज अ सिचुएशन. देयर आर सम सीड्स विच कैन फ्लाई टू द अदर प्लेसेस एंड द ट्रीज आर
मूविंग, वो ट्रीज क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. देयर ब्रांचेस आर मूविंग एंड द सीड्स आर कमिंग डाउन एंड दे आर फ्लाइंग टू द लॉन्ग डिस्टेंस. देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, squirrels, birds, water help to the seeds to travel and reach at the different place. Now the question will be arise in your mind, ma'am, how the squirrel, birds and water is helping to the seeds to get to the next place. उनको दूसरी place पर जाने के कैसे help कर रहे हैं? So see the picture. Are you able to see the picture here? Who is there in the picture? Squirrel. And squirrel is having seeds in the hands. उसके हाथ में seeds हैं, right? And you have seen whenever squirrel is collecting the seeds, वो जैसे ही seeds collect करती है, वो squirrel वहाँ से भागना start कर देती है and that squirrel is going to the particular its home. वो अपने घर पर चली जाती है और otherwise she will travel to the any other place. It means she has the seeds in hands and she is traveling. So उसके हाथों से उन seeds को from one place to another जाने का chance मिल गया, right? So with the help of squirrel they are able to go from the one place to another. Same thing happened with the birds also. Now see the picture of bird. Birds are also taking the seeds from one place to another. काफी सारे persons पता है, some persons are keeping at home also some seeds for the birds. Birds के लिए वो काफी बार घर पे रखते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरी. These seeds birds are eating. So some persons are keeping ज्वार, बाजरी at home in the balcony area or in the garden area. They are keeping seeds in their home, and the birds are coming here and they are collecting that seeds and moving to other place. So with the help of birds also, the seeds are traveling from one place to another. Birds are also going, changing their places. वो अपनी place change करते रहते हैं. So they are taking their seeds with them and they are traveling with the seeds. Now water. How the water is helpful to the seeds to move? Yes. आपने कई बार notice किया होगा some seeds are floating on the water. काफी सारे seeds ना पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. मतलब जैसे ही आपने पानी के अंदर उनको डाला तो दे विल कम अप, दे विल नॉट गो डाउन, वो डीप वाटर में नहीं चले जाते बट दे आर कमिंग अप. तो ऐसे सीड्स काफी बार वाटर के साथ ट्रैवल कर करके दूसरी जगह पर भी आ सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिवर, राइट? आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि रिवर में अगर कोई सीड्स हैं, सो विद द हेल्प ऑफ, जैसे ही वहाँ पर रिवर का मूवमेंट होता है, वाटर इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, धीरे धीरे करके वाटर आगे बढ़ता है. सो विद दैट वाटर द सीड्स आर ऑल्सो कमिंग forward and they are changing their place. So seeds are getting the help of squirrel, birds and water to change their place, to travel from one place to another. Okay, so now I will tell you about something new story but in the next video. Today we have completed what? Yes, so many seeds topic we have completed, and wandering seeds, how the seeds are traveling from one place to another, that we have completed today. In the next lecture we will continue with the next topic.